Odds question of chapter square and square root. The question 1 is the cost of labeling a square lawn at rupees 15 per square meter is 19,935. Find the cost of fencing the lawn at rupees 22 per meter. The cost of labeling the square lawn, it means we can find the area divided by 19,935 divided by 15. We will find the area of the square lawn. Then we will find the side of the square lawn. The total cost of labeling. The given total cost of labeling the lawn 19,935 and cost of 1 square meter is rupees 15. Now the area of lawn 19,935 divided by 15. Now divide and you will get 1329 square meter. This is the area of the lawn. The area equal to side into side. So we have to find the side of square lawn is root of area. Now we can find the square root of 1329 up to 2 decimal place. Okay. So we can find the area of square lawn by long division method. 1329 of our 2 decimal places 00. Make pair. First 3 3s are 9. First digit is 3. 13 minus 9 4 और दूसरा सेकेंड पेयर नीचे ले आएंगे. अब प्रोसेस क्या है 3 plus 3 6. ओके पुट ए डिजिट अगेंस्ट दिस. आई थिंक 6 36 6 6 and 39. ओके एड दिस डिजिट एंड माइनस हियर. रूल में क्या करता है कि इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट. इसको ऐड करेंगे तो 72 एंड सब्ट्रैक्ट 9 minus 6 3 12 minus 9 3 33 36 पॉइंट. अगला पेयर 00. अब 72 के आगे एक हमको ऐसा डिजिट लगाना है जो यहाँ पर चला जाए. तो 7 5 जो 35 5 लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा 4 लगाएंगे. देखिए मल्टीप्लाई 724 by 4. 4 4 16 4 2 जा 8 9 4 7 जा 28. Okay. Now this add and subtract. 36.4 subtract 10 minus 6 4 9 9 0 12 minus 8 4. This will add 4 plus 4 8 2 7. Now लास्ट पेयर ऑफ 0. अब इसके आगे हम लोग को क्या लगा सकते हैं 7 5 जा 35. ये 40 है तो आई थिंक 5 सूट करेगा. 5 5 25 14 3 6 4 2 5. सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 9 7 5 which is lesser than this. The answer is 36.45. It means the side of the square is 36.45. इसको हम लोग राउंड करेंगे तो आ जाएगा 36.5. Okay. Now this is the side. If we want to fencing the lawn, तो फर्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर. पेरीमीटर इज 4 into साइड. 4 into 36.5. 4 into 36.5. Now multiply 4 5 are 20 to 26 to 130 146.0. Okay.
146 perimeter. Now the cost of fencing, फेंसिंग तो पेरीमीटर में ही होगी, तो पेरीमीटर कितनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? 22 रुपीज पर मीटर. नाउ मल्टीप्लाई 22 into 146, you will get rupees 3212. Okay, this is the cost of fencing. Now क्वेश्चन नंबर 2. कैसे बनाए हैं कि पहले एरिया निकाले हैं डिवाइड करके, एरिया से साइड निकाले हैं स्क्वायर रूट करके, साइड से पेरीमीटर और देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. द क्वेश्चन नंबर 2, इफ रूट 2 इक्वल टू 1.414, रूट 5 इक्वल टू 2.236 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.732, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 72 प्लस रूट 48 and root 125 by root 64. Root 2 equal to, given that root 2 equal to 1.414. The value of root 2 is 1.414 and root 3 equal to 1.732 and root 5 2.236. These are the given values. First find root 72 plus root 48. First we have to factorize 72. 2 into 2, 2 into 2, 8 into 3 into 3. 8 9 just 72 and 48. 2 into 2 into 2 into 2 into 3. The prime factorization of 48. Now पेयर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 6 root 2 and this is 4 root 3. पेयर से बाहर निकलेगा तो ये 2 आएगा, ये यहाँ 2 आएगा तो 4 root 3. Now put the values of root 2 and root 3. 6 into 1.414 plus 4 into 1.732. Now multiply 8.484 and 4 into 1.70, 4 to 8, 6.928. Now add 8 4 12, 3 8 11, 1 carry 14. This is the 15. The answer is 15.412. And the second one is root 125 by root 64. This is the second question. So you can find root 125 is 5 into 5 into 5 divided by 8. This is equal to the 5 into root 5. 5 root 5 by 8. Now 5 into 2.236 divided by 8. Now multiply 5 into 6 30, 18, 11.180 divided by 8. Now divide by 8. 11.18 divided by 8 is 83975. This is the answer of 5 root 5 by 8, 1.3975.